आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में मैं सभी मीडिया से आए हुए हमारे तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं अपने दरख्वास्त करूँगा मिसेस डॉली ठाकुर, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर लाडली मीडिया अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी, उनसे कि आप डायस पे तशरीफ लाएँ। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर शाहिदा डायरेक्टर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज और जनाब रिजवान अहमद साहब डायरेक्टर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर से कि हमें ज्वाइन करें। अ, सबसे पहले तो इस छोटी सी ताखीर के लिए मैं माजरत खा हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि आज शहर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ट्रैवल एडवाइजरी है बहुत सारी, शायद इस वजह से हमारे बहुत सारे साथी अभी रास्ते में हैं जो पहुंच नहीं सके हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा ताखीर ना करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा हमारे वाइस चांसलर आली जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, मिस डॉली ठाकुर नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर लाडली मीडिया अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी, डॉक्टर एल शारदा डायरेक्टर पॉपुलेशन फर्स्ट, कि आप हमारे मीडिया के साथियों को खिताब करें। मैं ये बताता चलूं इस बात से कबल कि ये 12वां 12th लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी है, जो कल शाम को इसी कैंपस में मुनक्किद होगा। बाकी डिटेल्स के लिए हमारे डिग्नेटरीज आपको बताएंगे। जी। To address, okay. Uh, well, I mean, highlights. I was just, looking at it. These are, very important aspects of any academic endeavor. I mean, like, I mean, of course, first of all, my, thanks to Laadli ji and the Laadli Media and Advertising, because this, involves, uh, gender sensitivity. Uh, then population, yes, there is UNFPA mandate and embassy of Norway. I know occasionally you see the ambassador of Norway. We discuss things. Just 2 days back, also we had a discussion, and all of us are concerned. So population is one area where we are striving very hard. Professor Shahida is last week there was a workshop also, there was seminar. uh, so this is how you see we are moving forward. And women education is, of course, as you know, our campus is uh, evenly divided. I mean, even in the sense that, you see, as far as our admissions are concerned, we are taking into consideration all the aspects of co-education. Girls and boys, see, both of, we have our hostels. Last year we accommodated more than 100 girls on the basis of their persistent demand. Parents say, still, you see, they feel comfortable when their daughters you know stay on the campus and the hostel accommodation is provided to them. Living in a PG accommodation is, uh, yes, not very comfortable idea. So therefore, you see, we are focusing more and we are thinking in terms of having more hostel for girls and boys both, but particularly for girls, extension of the wings, etc. These are in our plan, and definitely we will implement it very soon. Uh, then, all levels of education, we are uh, trying to improve quality education. And as national education policy, we are, on our way to implement it. Uh, you know, uh, in later any spirit. What is happening on one hand, you see our courses, and then on the other hand, when you acquire a degree,
you should also carry forward some skill, Therefore, you can connect yourself with the industry, with the, IT, and then whatever is the requirement of modern world. So therefore, for this connectivity, we have started fashion designing and interior designing courses in our Lucknow campus. For your information, this is not the only campus. We are having, off campuses also. There are 32 off campuses, and Maulana Azad National Urdu University is catering to the need of l- uh, you know a huge section of, say, marginalized people, in fact. And mostly, you see, 70% is our students belong to the marginalized section, and that too, from first generation learner. They are the first generation learner. So bringing them to the mainstream and, taking them along, providing all sorts of facilities within the campus, outside the campus, designing courses according to the pattern and according to the need of the hour. These are in the pipeline, and we have been improving and improving again and again. Another thing is that introduction of new courses. Now, this year only, see, we have introduced master's program in legal studies. So, 2 year MA program in legal studies we are starting. On the other hand, there is a kind of approach which we call, you know multilingual approach. So multilinguality, we have introduced Russian and French from this year, in fact. So our students will be doing diploma. On the other hand, one should not carry this impression that Urdu university means only Urdu. Our Urdu background students are doing all, courses, all disciplines, in fact, starting from technology to right, and coming back to the humanities, in fact, social sciences. uh, that, on the campus also, off the campus also. So they are the 8 centers for teacher education, in fact. So we are also doing a lot for teacher education. We have our model schools. There are 3 model schools also, right from scratch, from the very beginning, from class 1 to class 12, in fact. And, you know, our campuses are located in such places like, Nu in Haryana. And then one model school is here in Falaknuma in Hyderabad, and the other one is in Darbhanga. So how we are planning, in fact, how we are trying to, you know cater to the close communities, in fact, see, where, they are deprived of education, in fact. So boys and girls both, last time I visited Nu, and I saw the kind of enthusiasm and fervor, um, in order to go to the higher studies. So this is very, 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 successful and well identified areas where we are striving very hard. Similarly, any kind of gender discrimination is not possible in this university. We have our women studies, a separate division where our teachers, our students, they are working very hard day and night. uh, our libraries are full of, books and periodicals. They are really helping out. And on the other hand, we always say acquiring more and more languages will give you more benefits. By introducing foreign languages does not mean that we should not learn our own language. I mean, Urdu, on the other hand, if there is a translation from Urdu to Russian, Urdu to French, or French to Urdu, Russian to Urdu, so it will serve the purpose of national education policy, where we are saying it should be a multidisciplinary approach, multidisciplinary, multilingual approach. So this is how these are the highlights of this university, and definitely we will show our strength in the days to follow. With this, if you have any question, you can ask.
but be careful that uh, never be under wrong impression. Our teacher, English teacher has come all the way from USA, in fact, and she has selected his students in three batches, 30, 30, 30, and she will be able to bring our students, the Urdu background students, on par with the English background students. So this is how our endeavor is, and I think all of us are together. Let us put our heads together and do the needful, whatever is required today, and what we will be requiring in future. So with this, you can ask if you have any question. You can ask. You want? Thank You you, want sir. to say? And again, you see, Sir. once again, Sharda madam is also here. You see, I am very Yeah. thankful to her, and of course, Dolly madam, Dolly Thakur ji is there. Is there. Rizwan Sahab, Shahida madam already I said, and our Professor Faryad is there. So these, the young Turks, we are expecting more from them, and I hope you see they will come up to our expectations. Yes, please. Thank you, sir. Now I would like to invite Miss Dolly Thakur, ma'am, National Coordinator for Laadli Media Awards for Gender Sensitivity. No, no, no. You can. Yeah. Sir, I was very delighted to hear at the kind of progress that you people have made. What I would have liked was to see many more women here. Even amongst the journalists, I would have liked to have seen women over here. And also, I would have liked to have, this is my personal thing, an interaction with the women, and find out from them how all these changes have benefited them, how much they have progressed, and what their parents feel. Because remember that that is the first barrier that they have to cross. But I'm so glad that you have taken the step, and the kind of things that you've said shows the positivity of what the university or what the institution is doing for them. So I'm very happy to be part of the Girl Child campaign. I've been involved with them for 12 years, all thanks to this great woman, because she is the one with the power behind it all, and she keeps pushing you and throwing you to it. But um, uh, and I'm so glad that we have crossed small hurdles. There are many more that we have to cross, and but we are working. I hope that we will still continue, and the young will instill this energy into the young ones. So please bring your wives and sisters and mothers to come and attend these sessions and interact with us so that their minds can be opened up. So that is my one request to all of you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. A. Sharda, ma'am, Director Population First, to address our media friends of media. Good afternoon. Can you hear me? Is the mic working? Yeah. Thank you so much. आप सबने, in spite of all the traffic restrictions, Bharat Jodo Yatra and the pressure of covering Bharat Jodo Yatra, attraction of Bharat Jodo Yatra, आपने यहाँ पर हमारा छोटी सी program attend करने के लिए आए हैं. It really makes a big difference to us. Thank you so much, all of you. Jesse, first of all, I would like to thank VC sir and Center for Women Studies and Instructional Media Centre for collaborating with us. क्योंकि हर बार जब हम कोई काम करते हैं तो we like to collaborate with people of who think the same way. And जैसे VC sir ने अभी कहा, there is so much of commitment to make a difference to women. Women constitute 50% of the population, and we need to take them with us if we really want to make progress. जैसे कहते हैं कि अगर वुमेन भी इकोनॉमिकली एंगेज्ड होते हैं तो जीडीपी जो है 2 गुना बढ़ सकती है. So we cannot really ignore women, and we need to invest in women, because we are looking forward to a world that is more gender sensitive, that is more equitable, and that is more just. And that is the dream of every individual, right? We want to live in a better world. And that is one reason we have started the Laadli Media Awards.
It started as a girl child campaign because if you look at the data, you find that in India there are only 1000 लड़कियों के लड़कों के इससे कंपेयर करें तो there are only 898 girls being born. तो आप सोच सकते हैं कि कितने लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मिटा दे रहे हैं, क्योंकि वी डोंट वांट गर्ल्स. एक गर्ल है तो बस. आप अगर डेटा देखते हैं तो फैमिलीज विच हैव वन डॉटर वन सन, फर्स्ट सन, सेकेंड चाइल्ड के लिए वी हैव ओके सेक्स रेशियो. बट इफ द फर्स्ट डॉटर or first child or the first two children are daughters, the sex ratio comes down to 700. So nobody wants more than one daughter in the family. Why? And how is it fair? Like, how is it going to impact our society? And we need to look into the deeper reasons for this discrimination. उसी मकसद से हमारा लाडली मीडिया कैंपेन शुरू हुआ है. एंड हम मानते हैं कि मीडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि मैं अगर एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट बनाती हूँ और एक छोटा सा आर्टिकल लिखती हूँ तो कितने लोगों के तक पहुंचेगा? बहुत, not many people, because I'll put it in my newsletter or in my blog, which has maybe 1,000 people reading it. Or I make a video and I put it on YouTube or something on a channel which plays only at 11 o'clock in the night when nobody's watching. So I can't reach, nobody can reach the people the way media can reach. You write one article, your readership is 10 million, उसमें से 10% भी पढ़ा, so you're reaching out to 1 million people. So it's you have the power to make a difference. So what do we mean by gender sensitivity? It's not about writing about women. It's not about writing about women. It's understanding that men and women get impacted differently by the same thing. मैं 2-3 examples देती हूँ. आप अगर देखते हैं तो स्लम रिलोकेशन देखते हैं. स्लम रिलोकेशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? कहाँ पर उनको भेजा, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, क्या क्या फैसिलिटीज दिए गए हैं, राइट? वही हम लिखते हैं अगर स्लम रिहेबिलिटेशन. मगर आप कभी लड़की की, औरतों की तरफ से देखते हैं तो क्या होता है? सपोजिंग मैं कोलाबा में हूँ, बॉम्बे में, और मेरे कोलाबा के स्लम ड्वेलर्स को पनवेल में शिफ्ट किए हैं. पनवेल से द मैन विल कम अर्ली मॉर्निंग, लोकल पकड़ेगा, कोलाबा आएगा, काम करेगा. मगर उसकी बीवी जो हमारे घरों में काम करती हैं, वो पनवेल में कहाँ नौकरी मिलेगा उसको, विच इज आउट ऑफ द सिटी वेयर देयर आर नो हाउस होल्ड्स. और व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर उसको एक बना सपोर्ट सिस्टम है, स्कूल है, आंगनवाड़ी है, एंड नेबर्स का सपोर्ट है. वहाँ पर वो जो छोटे छोटे खाने जो बनाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में, वो किस तरह से उसमें जीती है, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज शी फेसिंग. कभी आपने सोचा कि मैं एक रिहेबिलिटेशन स्टोरी एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकती हूँ? अगर आप एक डिजास्टर के बारे में देख रहे हैं तो फ्लड हुआ है, इतने एकर्स का लॉस हुआ, इतना धान्य खराब हो गया, मिनिस्टर ने ये कहा, वो मिनिस्टर ने ये नहीं किया, वो गवर्नमेंट ने ये कहा, इतने पैसे खा गए हैं, आप यही लिखते हैं ना. मगर जब ये एक डिजास्टर होती है तो वुमेन कैसे इफेक्ट होते हैं, वेदर इट इज अ कम्युनल राइट, वेदर इट इज फ्लड, वेदर इट इज अ सुनामी. सुनामी में आपको पता है ना कि बहुत सारे औरतें इसलिए मर गई क्योंकि वो भाग नहीं पाए, साड़ियों में थे, बच्चों को लेके चल रहे थे वो. सो दे कुड नॉट रन एंड सेव देमसेल्व्स, दे डिडंट नो हाउ टू क्लाइंब ट्रीज. ओके, सो जो चीजें हैं औरतों को अलग तरीके से, आदमी के कपड़े नहीं है तो भी भागेगा, मगर मेरा थोड़ा पल्लू ऐसा है तो आई विल बिकम राइट, मैं सोचूंगी कि मैं कैसे जाऊं पब्लिक में. जब कपड़े वॉश आउट हो गए, बच्चे को हाथ में लेके सामान वामान उठाते हुए औरतें नहीं भाग पाए, और बहुत सारे डेथ्स जो है औरतों को हुआ. जब हम उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको जो रखते हैं सेंटर में डिजास्टर के बाद, वहां पर क्या टॉयलेट्स होते हैं? टॉयलेट्स है तो कितने अच्छे हैं, औरतें वो यूज कर सकते हैं. What kind of exploitation happens because women who lost their family members were hounded by men to get married, क्योंकि उसको मिलता था, एक आदमी मर गया तो, एक मेंबर मर गया तो 1 लाख रुपए, तो 4 लोग मर गए तो 4 लाख रुपए उसके पास. So men were hounding them, touts were hounding them to get married. And there was a lot of trafficking of girls who were deserted, who were orphaned during the tsunami. So ये वाली stories क्यों नहीं हम लिखते हैं? हमें लिखना चाहिए ना, क्योंकि एक औरत की जो
एक्सपीरियंस होती है वो बहुत अलग होता है, क्योंकि एक सामाजिक लिमिटेशन से, एक सामाजिक फ्रेमवर्क है जिसमें हम काम करते हैं, औरत और आदमी। इसका मतलब नहीं कि बस औरतों के बारे में ही लिखो। इस सेम जो आइडियाज है, आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी जो है आदमी लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखिए, या एग्रेशन, वायलेंस देखिए। वी हैव लॉट ऑफ वर्क ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, राइट? हम बहुत लिखते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बट देर इज ऑल्सो सर्टेन टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ट्रांस पीपल, again against boys. Boys suffer more sexual violence than girls, but do we write about it? Because we feel boys bole to, men bole to, there's no chance of violence, which is not correct. Lot of bullying happens, lot of other things happen which affect women, men. And if there is an economic disaster, there is loss of jobs, who suffers most? Men, because they lose jobs, and for them job is something which is very important. It identifies them, it gives them value, and when they lose the job, the impact it has on them is much worse than the impact a woman losing a job has. So we need to look at gender stories from this perspective. Then there is a lot more inclusivity, because all the stories that we write are majoritarian. They talk about majority groups, whether it is urban, educated, Hindu kind of stories that we have. But there are so many people who are not covered in the media, and it is very important to cover. As VC sir has said, that it is important to reach out to the most marginalized in the society, and that is what makes me feel very happy about this collaboration, because it is wonderful to work with an institute which is so committed to gender equality and inclusion. That is something, marginalized people. You can still work for Muslim community, and then you can, or any community, and then pick up only the elite people. But to go to the remotest villages, go to the most far-flung places, and then provide education to the most marginalized groups in society is something which is amazing, and I really congratulate the university for that. So this is what our Laadli Media Awards do. We have awards entries from across the country, and we have print, electronic, web media who will be applying. And under each category, we have 7-8 categories like editorial, investigative stories, features, etc., etc. And we also have awards for films, theater, drama, books, and Laadli Lifetime Achievement Award, Laadli of the Century Award, and Women Behind the Screen Award for cinematographers, makeup artists, directors, women directors who are never recognized and who are never in the, like if I ask you who is the most popular director, you may say Karan Johar or somebody, but it never comes to mention Tanuja Chandra. Like, it's just there that they are invisible in our mind. So we have to really recognize them. So we have different kinds of awards at the national level. At the regional level, we award around 75 winners in 13 languages. So you can imagine. So we have winners coming from Northeast, with Kashmir, and Chhattisgarh, all over the country. And we are giving the Lifetime Achievement Award to Srimati Sardar Srinivasan, and I'm sure none of you have heard of her, because she's 87-year-old and she was a pioneer in radio communication, and her voice for our generation is like Dolly's voice to all the people. Like, people recognize Dolly by her voice. She is epitome of Mumbai All India Radio, right? No, television, DD. So we have Sharda Srinivasan is somebody like that, and we are very honored to present the Lifetime Achievement Award to her. So I request all of you to please come and join us tomorrow also, and cover the event, and give us. Support us, and make us feel nice that there is somebody who believes in our cause. It's very important. It's not just about writing, it's about believing that there are people who share our vision, who share our vision of a good tomorrow, or a tomorrow that is bright for everybody, not just for the privileged and entitled, but each one of us is benefiting from that. I believe in that concept of Ubuntu, which is I am because you are.
because I am whatever I am because you all are there with me. So please do come tomorrow and give us and encourage the winners by covering their stories, by covering the event. Thank you so much. थैंक यू मैम. मेरे ख्याल से सवाल जवाब के लिए हाउस ओपन है, आप सवाल पूछ सकते हैं. इम्तिहान के बाद डिग्रीज देता है लोगों को, अवार्ड करता है. ये अवार्ड फंक्शन इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का किस क्या टर्म्स पे आपका एमओयू हुआ या किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है? Can I come over? There is a अस्सलाम वालेकुम. पहली बात तो ये कि शुक्रिया अदा करूँ, आप लोग तमाम यहाँ पे हैं. वी वेलकम यू एंड आई ऑन द डायस मैं अपने वाइस चांसलर डॉली, शारदा, फरियाद और रिजवान को भी वेलकम करती हूँ. रादर रिजवान इज माई को होस्ट. एनीवे, तो ये जो आज की मीटिंग है, प्रेस मीट है, इसकी वजूहात हैं. ये जो हमने शुरुआत किए हैं इस अवार्ड फंक्शन की, ये हर तरफ होता है, हर साल होता है, कभी बॉम्बे कभी जयपुर. रीजनल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं. शारदा ने हमें अप्रोच किया कि एक एमओयू साइन करते हैं हम यहाँ होस्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज वी ऑल वर्क फॉर द कॉज ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड वेमेन. तो यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया है इसमें, और हम तमाम लॉजिस्टिक से लेके हर चीज़ का इनको सपोर्ट कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा इसमें रोल है. गेस्ट को आइडेंटिफाई किया, साथ काम कर रहे हैं हम लोग पॉपुलेशन फर्स्ट के साथ. मनु इज ए को होस्ट ऑफ दिस होल फंक्शन. पहली चीज़ मैं कुछ और भी बताना चाह रही थी कि मनु का एक मैंडेट है ख़वातीन की तालीम को फ़रोग़ देना. और आप देखिएगा कि सिर्फ तालीम को फ़रोग़ नहीं मिल रहा है, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसमें भी बेहतरी लाने के लिए, ख़वातीन की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग इंटरवेंशनिस्ट रोल करते हैं. उसके लिए सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ भी है, जिसकी इत्तेफाक से मैं अब डायरेक्टर हूँ. तो उस लिहाज से हमने यहाँ पे ये काम साथ कर रहे हैं, हम और पॉपुलेशन फर्स्ट दोनों मिलके, जिसको UNFPA फंड कर रहा है. ये सपोर्टेड बाय UNFPA. तो ख़वातीन के लिए जो हम कर रहे हैं, टीचिंग का अलग चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन जहाँ वुमेन स्टडीज़ पढ़ा जाता है. ग्राउंड रियलिटीज़ के लिए, प्रैक्टिकल काम करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए हम लोग बाज़ाब्ता ग्राउंड पे काम करते हैं. जैसे हमने फिल वक्त 2 स्लम्स अडॉप्ट किए हैं, जिसमें काफ़ी कुछ काम हो रहा है. एक है आपका एराकुंटा, दूसरा है हफीज़ बाबा नगर. तो ये देखिए, यहाँ इससे पहले हमने डिजिटाइजेशन के लिए 6 रूरल एरिया सेलेक्ट किए थे, लेकिन काम अधूरा रह गया इसलिए कि फंड्स की कमी थी. तो लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन इज दिस कैंपस टुवर्ड्स बेहतरी ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन. हमारे पास कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट भी है, जो देखती है कि हमारे बच्चियां यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहें 4 वॉल के अंदर, और कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना, उनकी फुल सिक्योरिटी का ख्याल किया जाता है. तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ख़वातीन की बेहतरी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए टीचिंग होता है, एडवोकेसी होता है, कंसल्टेंसी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और एम्पेरिकल वर्क करते हैं. दिस व्हाट आई वांटेड टू से दैट एमयू साइन हुआ है सेंटर, और रिजवान जो IMC के हमने इसको किया है, and we'll be doing it lot of more with Sharda. Earlier also we had done this, and in future also we'll be collaborating. Thank you so much. Well, I have a question with Mrs. Sharda. As in your speech, you have mentioned that you received more than 900 entries, and that too, I believe, 993 entries in 13 languages from across the nation. So, what are the parameters on which you judged these awardees? I mean, 73 or 76, I think. 76 you have selected. So, what are the parameters? And among the awardees, how many are female journalists? I just wanted to know. So we have a very
We have a very elaborate jury process. Once we get the entries, we check them out for whether they're meeting all the administrative requirements like date criteria, date में है कि नहीं, editor का signature है कि नहीं, and all those things. And after that, we have regional juries because we give awards region wise. So we have 4 region awards happening tomorrow. So for each region, we have language wise jury, and our jury members are very, very senior members from art, from academics, and from activism, and also from media. So we have the senior editors as our jury members, or senior writers who've been in the media field with say 20 years, 30 years experience as our jury members. What are the criteria? So the criteria for this are: one is writing positive stories about women achievers, and writing stories about women who have women and men who have defied the gender stereotypes. जैसे कि अगर there are stay at home fathers, right? There are many women men these days जो घर में रह के बच्चों को देखते हैं और वो लोग this thing, or the impact of working from home on men and women, you know, those kinds of stories. Then implementation of programs, कैसे implement हो रहे हैं, whether it is भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, or whatever is the thing, employment guarantee scheme, or whatever are the government schemes, are they being implemented well or not? So, or why they are not being implemented. 4 is social practices, you know, negative bad social practices, like if they write about child marriage and dowry, bride burning, or you know, the devadasi, the child, yeah, child trafficking, etc., etc. So the negative harmful social practices, those who write on, those who write on the politics and participation of women in politics, like, you know, supposing there is a panchayat election, how are you covering it? Are you talking about how, for instance, two child norm? There were very good articles in Haryana. There are two. There was a two child norm, that if the candidate has more than 2 children, he or she is not eligible to do the contest the elections. How does it affect a woman and a man? A woman gets pregnant. Everybody knows she has 3 children, 4 children. A man can always say that no, I am not the father, or I say that I have divorced her, so I am not coming the two. And how did it affect them? And also similarly, when they said there is a minimum education level required for contesting the election, how some of the women who were doing excellent work as sarpanches in Punjab and other places had no option to contest again, and they lost. Those stories were the ones which got the award. Then work, women and work. How is women's participation in work? For instance, you all must be knowing that the work participation rate of women is coming down. It has come down from 22 say or under ho gaya. Why are women not going for work, in spite of the fact that we are having more and more women completing graduation? If you look at even the data for the Muslim community, there is a tremendous increase in higher education of women in the community. But what is the work participation rate? Why is this happening? What is it that is stopping women from going to work? Is it the insecurity? Is it the unsafe working conditions? No, not having enough support systems for childcare? Or is it the patriarchal perception that your family is doing well, you don't send your women for work? Yeah, lot of factors. So are we analyzing them? So we have politics, we have women, we have education. For instance, lot of during the COVID time, there are the gender gap, digital gender gap has increased tremendously. Well, boys were still able to use the mobile and attend the classes. Many of the girls didn't have the access to the mobiles, and they were not able. So the gender digital gap, whether whatever it is. So these are all the criteria, stories which deal with the culture, films, like analyzing films from a gender perspective, how sensitive or insensitive it is, or anything. So anything which uses the perspective of gender that I have told, that men and women get impacted differently, then, and with that perspective, you write a story that is eligible. For instance, current affairs.
in one of the stories that won the award was about the Commonwealth Games. During that time, when everybody was writing about what is happening, how many people are winning the awards, etc., etc., one journalist found that there were a lot of women coming with 4-5 adolescent girls in trains to Delhi, and that made her suspicious. And she followed up the story, and she found that trafficking or moving of the sex workers from other cities to Delhi has increased during that time because of the floating population. So who will think of that story unless you're really cued into the gender issues? So we have amazing stories, like one journalist has exposed the practice of IAS officers having to report on their menstrual cycle, which is some British age ka format tha, and she exposed it, and then she got an award. And the government has removed that from the format. So we are looking at stories which are looking at the reality from a gender perspective. मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं दैनिक भास्कर के लिए काम करता हूँ। अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर को हमारे अखबार ने एक स्टोरी की थी राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनकी बोली लगाई जाती है, वहाँ पे लड़कियाँ बेच दी जाती है। शायद सब अखबारों ने उसको फ्लैश किया था। तो क्या वहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती? जो कि लाडली योजना है उसका मकसद ही वही है कि लड़कियों को इम्प्रूव करना, उनको जो आगे बढ़ाना। तो क्या वहाँ तक सरकार की नज़र अभी तक नहीं गई है? इस पे आप क्या कहेंगी? See, we are not into any programs ki jaake hum kisi ko rescue kare. That is not our this thing. But I remember a boli bolne wali jo story hai, it was highlighted. It was highlighted in the news media, and it won an award also. And it had an impact ki in that particular Rajasthan mein shayad jis district mein wo ho raha hai, wahan par they have put a stop on that in that particular village. एक गांव है जहां पर ये होता है. तो when you write a good story, it's particularly in this time, like in these times when the social media is so active, you put it on the social media, there is so much hue and cry, and there is so much of pressure on the government to act, and it is a job of the government to act. We cannot act. So the pressure, the power of the media is to expose those stories, give traction in the social media, put pressure on the government to make a difference. Ma'am, sorry. You want me to? मैं अभी ऐसा कर लूँगी. We got 2 entries. I think we won. We gave an award to one. नहीं, हमने बहुत किया है. मैडम का भी हेल्प लिया है. कितना किया है. हमारे ये एक कंप्लेंट आई है कि उर्दू का कोई एंट्रीज नहीं आते. पता नहीं क्यों. मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ आपको. हमने लास्ट ईयर 6 महीने पहले या वेरी बिग इवेंट हमने यहाँ किया. तमाम उर्दू मीडिया के एडिटर्स को, चीफ एडिटर्स को यहाँ बुलाया. कोविड के दिनों में इमेजिन ऑनलाइन किया. कुछ लोग यहाँ थे सियासत के, अमीर अली खान साहब तशरीफ लाए, कई लोग यहाँ के लोकल आए, और सबसे रिक्वेस्ट मुसलसल लेटर्स भेजे हम लोग, प्लीज सेंड एन एंट्री टू दिस इज द अवार्ड. मल्टीपल टाइम्स यहाँ से PRO सेक्शन से गए, हम गए, और ये साल फिर मैंने किया. आई थिंक 20 एंट्रीज वी कुड गेट. 20 एंट्रीज उर्दू के ये साल आए, 19 और 20 आए, और फिर वी कुड डू इट विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. मैं बता रही हूँ. और since I'm involved with Sharda and their work, I don't want to reveal what am I with you, but it was wonderful reading them, because इन्होंने, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके लिए बड़ा सा डैम बनाया, ठीक है, लेकिन वो गांव वालों पे क्या असर हो रहा है? मर्द को तो हुआ, लेकिन उन औरतों पे क्या गुजर रही है, जिनके लिए पानी दूर, हर चीज, जमीन छीन ली गई, सब चीज छीन ली गई. इस तरह के इश्यूज लिए जाते हैं. लॉ के जो अमेंडमेंट होते हैं उसका इम्पैक्ट औरतों पे क्या होता है? हैव यू टेकन कॉमन मैन्स ओपिनियन बिफोर मेकिंग द लॉ? कानून बनाने से पहले आपने देखा क्या? ये तमाम एनालिसिस पे जब खलम उठता है ना, तो खवातीन की, बच्चियों की जिंदगी पे बहुत कुछ, मीडिया का रोल बहुत ही अहम है, बहुत अहम है कि खवातीन की जिंदगियों में आप किस तरह से मुस्बित बदलाव ला सकते हैं. इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया. I mean, it is a source which can bring a change. That's why ये लोग खास तौर पे
सालाना अवार्ड रखे हैं, हमारे पास सब रीजनल अवार्ड का होगा। या बहुत कम आते हैं उर्दू के, उसमें से बहुत सारे जो एक्चुअली क्वालिफाई होते हैं टू राइट, शाहिदा मैम ने देखा है तो उसमें पता चलेगा। बट आई थिंक वी हैव, हाँ, कश्मीर से बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। वी हैव अराउंड 60% और 70% आर women, 35% आर men. मैम बहुत सारे सवाल थे दिमाग में, लेकिन अभी जब मैंने आपका ब्रोशर या ऐसा मैगजीन कहीं देखा तो और कुछ नए सवाल उभरे। मैं इसमें देख रहा हूँ कि जेंडर सेंसिटिविटी की जब बात हो रही है तो ट्रांसजेंडर और क्वीर को लेकर सिर्फ 2 आर्टिकल्स को इसमें शामिल किया गया है, तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। अब पता नहीं ये एंट्रीज आई हैं या नहीं आई हैं। दूसरा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बीच में बड़ी बहस चली थी, सोशल मीडिया पे मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम वुमेन्स की बोली लगी थी बुल्ली बाई और सुली डील्स के नाम से, और खूब याद है कि उस पर खूब कवरेज हुआ था। क्या उनकी एंट्री नहीं आई है या उन्हें जानबूझ के शामिल नहीं किया गया है? Award winner which dealt with that. There's one issue which has done with the thing. See, the thing is that जैसे मैंने कहा कि our selection is based on the entries that we receive, right? If we don't receive the entries on any particular topic, even if it is covered widely in the media, they're not going to get the award, right? They have to, we do social media पे करते हैं, editors को लिखते हैं, individual networks पे डालते हैं, हम बहुत काम करते हैं for people to send. Either they don't want to send, some publications have restrictions on sending, and some people don't want to apply for awards. There are a lot of reasons why they don't send the entries. As regards LGBTQI का जो कवरेज हुआ है, and if it is done sensitively, लैंग्वेज की बात होती है, प्रेजेंटेशन की बात होती है, नंबर ऑफ रिसोर्स पर्संस का, वो पूरे हम जज करते हैं when they are covering any subject. So whatever entries we got, whatever we found, the jury found deserving of an award, we have included them, because we cannot include everything written about LGBTQ because it is about LGBTQ. We do a lot of work on LGBTQI. All our gender sensitization workshops have a session on, LGBTQI and other things. So we are very conscious of it. But the thing is, we should get good entries for us to about them. We are not at all against. We are not transphobic. We are not against any kind of sexualities and other identities. Yeah. ये 2019 में जो आपका डिस्टेंस का बैच शुरू हुआ था, वो अभी 3rd सेमेस्टर में है, जबकि उनके 3 साल पूरे होने चाहिए। उनकी कैसी भरपाई होगी, क्या होगा, क्या उनकी जिंदगी से वो 2 साल गायब हो जाएंगे? देखिए, जो बात है सच्ची है, वो आपसे छुपाना भी नहीं चाहिए। ऐसी कि मीडिया को ये बात समझना चाहिए। 2 साल जो कोविड के गुजरे, उसने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आप मुल्कों को देखेंगे तो एक सिस्टम को, जो चल रहा था सिस्टम, कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुंचाया। ये यूनिवर्सिटी कैसे बच जाती? डिस्टेंस में मुश्किल ये होता था कि वहां कौन जाए जहां पर किताबें रखी हुई हैं, जहां पेपर रखे हुए, डर लगता था उनको छूने में। यूनिवर्सिटीज में जो लेटर्स आते थे, जो पैकेट्स आते थे, वो ऐसे डंप कर दिए जाते थे, कोई छूता नहीं था, डर था। सॉरी फॉर इंटरप्शन, दूसरी यूनिवर्सिटीज ने उसको रिकवर कर लिया है, वो डिस्टेंस। आप सुनिए तो भी, आपने सवाल पूछा, इतना बड़ा सवाल पूछा है कि उसको आपको बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। आपको, हमारी यूनिवर्सिटी पहली उन यूनिवर्सिटीज में थी, बल्कि आप गिनेंगे उंगलियों पर आप गिन सकते हैं कि जिनके लिए कैंपस खोला गया, स्टूडेंट्स को बुलाया गया। मैंने ज्वाइन किया 28 जुलाई को, और उसके बाद अगस्त में वो वैक्सीनेशन के ड्राइव हुआ, और उसके बाद हमने बुलाना शुरू कर दिया। डॉर्मेट्री में बच्चों को रखा 3 दिन, उसके बाद उनको हॉस्टल दिया,
उनके साथ सारा हमने उनका हेल्थ का उनकी केयर की। अब ये बताइए, जो हमारा रेगुलर डिस्टर्ब था तो डिस्टेंस क्यों नहीं डिस्टर्ब होगा? हमने धीरे धीरे, आपने 2018 का नाम नहीं लिया, इसीलिए नाम नहीं लिया कि हमने 2018 के सारे बच्चों को डिग्री दे दी। 2019 का नाम आप ले रहे हैं इसलिए कि उनमें से एक आध दो बच्चों ने आपसे कहा होगा। सुनिए, अभी तो आप सही मैसेज पहुंचा दीजिए कि 2019 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हमने कराए हैं। आप सोचते हैं कैसे 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 मोबिलाइज किया है हमारे जो स्टडी सेंटर्स हैं उनको। से टीचर्स नहीं आते थे, कहते थे नहीं अभी नहीं आएंगे, तो बिल्कुल सिस्टम। और फिर ये कोई एक सिटी लेवल पर नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पर है, यूनिफॉर्मिटी भी रखनी पड़ती है। तो एक साथ हमने ये सब कराया। यहाँ पर तो बैठे हैं ये लोग, फरियाद साहब बैठे हैं ना, कैसे कैसे जाके लोगों को मोबिलाइज किया। अभी एक साल के अंदर आप सोच सकते हैं मैंने कितनी डिस्टेंस में डिग्रीज दी हैं। अब आप अंदाजा लगे, चलिए एक आप बता दीजिए, रफ फिगर बता दीजिए। नहीं आप बताइए ना, अगर आपके आइडिया है तो। 20,000 कोविड के बाद हमने जो डिग्रियां दी हैं लोगों को, 20,000 डिग्री। वो वही मैं कह रहा हूं कि उसमें बहुत थोड़े से बच्चे बचे हुए हैं, बाकी लोगों को हमने दे दिया। आप 2019 का भी डेटा उठा के देखें, पता है हम किस पोजीशन में हैं? हम इस पोजीशन में अब आने वाले हैं कि रेगुलर और डिस्टेंस दोनों के सेमेस्टर बराबर हो जाएंगे। इतनी तेजी से काम हुआ। हमारे पास कश्मीर में 4 टीचर्स थे, हमने उनको यहां बुला लिया, उनसे मदद ली, उन्होंने दिन रात एक किया, वो काम किया। हमारे 32 SLM एक्सपर्ट्स ने अप्रूव करके भेज दिए। सोच रहे हैं आप कितना बड़ा काम हुआ है। हमने हैदराबाद के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया, हमने बाहर से लोगों को इन्वॉल्व किया उनको। और दूसरी कोशिश ये की, देखिए होता क्या है कि आप जो टीचर्स होते हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका रिम्यूनरेशन भी तो इन तक पहुंचना चाहिए, वरना फिर ये काम नहीं करते। आज की डेट में कोई एक भी टीचर नहीं कह सकता कि उसका हमने कोई पैसा रोका हो, उसकी जेब में उनके उसके अकाउंट में चला गया पैसा। ये हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। और हमने एक चैनल खोल रखा है डायरेक्ट उनसे करस्पॉन्डेंस करने का। और सारे रीजनल सेंटर्स के अंदर हमारे पास, तो आपको व्हाट्सएप दिखाएं तो आपको समझ में आएगा हम कितनी कनेक्टिविटी रखे हुए हैं। रिमोटेस्ट एरिया में भी हमने स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। और आज जो बीच में एक छोटा सा वो एक गैप आ गया था, वो गैप खत्म हो रहा है। स्टूडेंट्स जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हमारे सेंटर्स के ऊपर, ह्यूज। अभी हमने बनारस का सेंटर खोला है, उसके अंदर इसलिए कि लखनऊ और पटना के बीच में कोई रीजनल सेंटर नहीं था। हमने बनारस को एक बनाया सेंटर, फरियाद साहब उसके इंचार्ज हैं, उसके कोऑर्डिनेटर है उस सेंटर के। और मदारिस से स्टॉर्म किए हुए हैं लड़के, इतने लड़के लड़कियां अप्लाई कर रहे हैं कि मैं आपसे बता, इसलिए कि उनको अभी थोड़ा सा कोविड के बाद निकलने का एक मौका मिला है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, मैं आपसे ज्यादा बोस्टिंग नहीं करता इस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन बेस्ट सर्विसेज हमारी यूनिवर्सिटी की होने जा रही है। और समर्थ से हमने जो है वो इसको वो किया है, हमने उनको ऑनलाइन जिस तरह से किया है, सेंटर्स पे बुला बुला के, जो भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, घबराते थे यहाँ आ जाते थे, अब नहीं आते। अब हमारे पास कंप्लेन भी नहीं आ रही है। ये आप मीडिया में लिखिए कि अब हमारे पास कंप्लेन नहीं आ रही है। सबसे खास बात ये सली पे आपको बता दूं कि पहली बार ये इनिशिएटिव हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी जहां हजारों में लाखों के आसपास बच्चे पढ़ रहे हो, हर रीजनल सेंटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कराए गए हैं। और खुसूसी तौर पे वीसी साहब खुद अपने आप को भी रखते हैं कि स्टूडेंट और आरडीज अगर रिस्पॉन्ड नहीं करें तो वाइस चांसलर है, और फौरन एड्रेस करते हैं कि वो बच्चा कब से बात कर रहा है, क्या हुआ। उसका ये फायदा हो रहा है कि ऑलमोस्ट चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। नहीं, यकीनन वीसी साहब ने जितने इकदाम किए वो मीडिया में भी आ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए। बस वो छोटा सा सवाल था कि भाई, मैं पूछने का मकसद यही था कि 19 वाला बैच क्या आप दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह जल्दी उनके सेमेस्टर शुरू करा के 1 साल घटा के कम कर सकते हैं? वो हमारा भी कर्तव्य है। आप लोग तो ये बात
बात हमारी बात अगर आप वहां तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, कि हम इसमें लगे हुए हैं। आपकी बात रोज पहुंचाते हैं। ये एक जो आपने इसका कि वो इंशाल्लाह बैकलॉग हमारे कल के अवार्ड फंक्शन के चीफ गेस्ट कौन है, और इसके लिए कुछ थोड़ा कल के अवार्ड के चीफ गेस्ट आज कल के हमारे जो आईपीएस ऑफिसर हैं टीम की चीफ स्वाति डॉक्टर उसमें आपने दिया है प्रोग्राम जो ब्रोशर है ना उसमें दिया। कुछ लेडीज की तरफ से सवाल आए तो ज्यादा अच्छा है, आप हेजिटेट मत कीजिए, आप जरूर पूछिए, आपके सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ब्रोशर में सब डिटेल्स They have already read it, gender sensitivity, so Please, you can speak out. मैम आप बोलिए। Mic दे दीजिए। जर्नलिज्म की तो बहुत Don't hesitate. Please. Hi, I'm Nazli. I'm the student of journalism mass communication. I wanted to ask that in rural areas there is still lack of education for women like girls, and they usually don't go to school. उनका attendance बन जाता है और सीधे वो लोग एग्जाम में ही जाते हैं। ऐसे है कि ऐसे तादाद तो बढ़ रही है कि हाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, पर ना उनका सिर्फ अटेंडेंस बन रहा है, वो एक्चुअली में स्कूल जा नहीं रही है। तो मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब लाडली ने कुछ ऐसा किया है या फिर क्या किया जा सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे 2 प्रोग्राम्स है, एक है लाडली जो मीडिया एडवोकेसी है, दूसरा वाला है आमची एक्शन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत हम काम करते हैं। वी वर वर्किंग इन 100 विलेजेस, नाउ इट हैज कम डाउन टू 15 विलेजेस क्योंकि फंडिंग कम हो गया है एंड प्रोजेक्ट्स क्लोज हो गए ड्यूरिंग कोविड 2 साल में। तो अभी वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि सारे गर्ल्स जो है वो स्कूल जाए और रेगुलरली अटेंड करें, और हम उसके लिए स्कूल लेवल पे भी काम करते हैं, मोबिलाइजिंग द टीचर्स, मोबिलाइजिंग द एजुकेशन कमिटी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, and we also run adolescent groups in the villages where we talk to the girls about the importance of education, and then about sexual reproductive health, about life skills, and etc. And I'm very, very happy to tell you that even during COVID, around 300 girls have come forward, and they were the foot soldiers because we could not go to the villages and there was so much. So they were the ones who used WhatsApp mobile to give us data on pregnant women. What are the problems being faced by adolescent girls with regard to not having access to menstruation products because schools were closed, they were not getting the sanitary pads. They were the ones who were looking at child health. So they are the ones who are really making a big difference and are also working towards girls' education and also to stop early marriages and early pregnancy. So we have a Kishori groups in villages. That's a small intervention, but yeah, as an organization, we are very well versed about what you're saying, and we understand that what is shown in statistics is not the reality. There's a lot that is not reported or not reported correctly. Can I just say one thing? आपके बाद यहाँ पर 2 बड़े बड़े लेक्चर्स हमने ऑर्गेनाइज कराए थे। एक तो था प्रोफेसर अमिताभ कुंडू का। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जो हैं वो सारे डेटाज उनके पास हैं, और पर्टिकुलरली वो गर्ल्स के लिए जो है उन्होंने जो डेटा फराहम किया था पूरे इंडिया के बाहर भी वो हाईलाइट हुआ और न्यूज़पेपर। और आई एम थैंकफुल टू आवर मीडिया एंड उर्दू मीडिया ने जब बहुत अच्छा कवरेज उसका किया था, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। दूसरा प्रोफेसर एसके थोरट का था। ये देखिए, ये दोनों लोग, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू वो हैं कि जिन्होंने सचर कमेटी के बाद कुंडू कमेटी ने जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट की थी वो उसके हैं। तो इनकी ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई इवन गवर्नमेंट भी चैलेंज नहीं करती उनको। और प्रोफेसर एसके थोरट जो यूजीसी के चेयरमैन थे और अभी हमारे यहाँ जो है वो ऑनरेडी प्रोफेसर हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी और मुस्लिम गर्ल्स के हवाले से
ऐसी ऐसी बातें रखी हैं कि जो एक अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। देखिए, मीडिया के सामने मैं एक चीज आपको बता दूं, आपका बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस में। हम चाहते हैं कि ये मीडिया जो है वो गांव में भी जाए, गांव देहात में, वहां जाके वो उन कंडीशंस को आप जब हाईलाइट करेंगे, तब यहाँ जो दूसरी तरफ जो प्रोवाइड करता है आपको ब्रेड एंड बटर, जो आपकी केयर करता है, हेल्थ में जो है, जो इन्वायरमेंट की बात करता है, उसका अटेंशन होगा। तो शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं मीडिया को। मीडिया खामोश रहेगा तो कोई नहीं बोलेगा, मीडिया बोलेगा तो सब कुछ होगा। ये मैडम बैठी है यहाँ पर, इनकी नॉलेज में मीडिया लाए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और जो आप लोग हैं, जो गर्ल्स हैं, जो इसमें जर्नलिज्म में है, इनका भी एक फर्ज है कि ये जाएं और वो ग्रुप को फोटोग्राफ भी आप अगर भेज देंगी तो बहुत बहुत काम करेगा वो। उसके ऊपर स्टोरीज बनाई जा सकती हैं, उसके ऊपर सामने चीजें आ सकती हैं। सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपकी निगाह है सिर्फ शहरों में, अर्बनाइजेशन जहाँ हो गया है वहां पर नहीं है, बल्कि वहां भी है कि जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर प्रोटेक्शन नहीं है, जहां हेल्थ के इंतजाम नहीं है, उस इंतजाम को आप लोग करवा सकते हैं। और इसमें जो है वो एक अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। और मैं ये दरखास्त करूंगा, अपना ये जो लाडली ग्रुप है इसको भी दरखास्त करूंगा कि आप उन वो जर्नलिज्म जो कि गांव और देहात और रिमोट एरिया से कस्बों में जो वो अगर हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसको भी एक अच्छा खासा प्रेफरेंस दें और उसकी तरफ तवज्जो रखें प्लीज। मैं जिस बात पे चर्चा करने जा रही हूँ वो एकेडमिक नहीं है। मैं एक माँ हूँ, मेरे पास एक बेटा है, और मेरे घर में हमेशा फैमिली प्लानिंग या लाडली की ऐसी सारी मीटिंग्स होती रहती है। और अब थिएटर में हूँ तो काफी थिएटर रिहर्सल्स होते हैं, तो कारपेट पे कागज और लोगों का कुशन फेंकना और जूतियां उतारना ये रहता है। मगर मैं एक महिला हूँ तो मुझे टाइडीनेस चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए। तो मैंने एक दिन, और सारे बच्चे आए हुए थे, कोई 15 लोग ऐसे बैठे हुए थे, और मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, आस्क तोरल, जो एक प्रोडक्शन लड़की थी और वहां पे, टू टाइडी अप द रूम, टू पुट द कुशन्स इन ऑर्डर। He turned around to me in front of everybody and said, Mama, why can't you tell me to do that? Why should Toral do that? And it's, I mean, here am I so into Laadli, promoting girls and all, and yet when it came to a job allocation, I turned to him and said, why can't the girl do that? But that attitude has to change, and that will come from all of us. When you go home, look at yourselves and see what you all can do. आपके बारे में हैदराबाद यहाँ गया था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हमारा कोलैबोरेशन भी चल रहा है उनसे, एनजीओ थे, उन लोगों ने किया था। यही बात, छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को समझने की है कि इस तरह का एटीट्यूड घरों में नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, किसी क्लासरूम में एक टीचर है, उन्होंने कहा एक स्टूल वहां से लेके वहां रखना है, तो वो कोई लड़की आगे बढ़ी, कहा नहीं तुम नहीं, वो लड़के, यही आप इंफीरियर बना रहे हैं उसको, यही आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। उसको उठाने दीजिए, जो करीब है उससे कहिए कि तुम उठाओ। ये सोचना कि लड़की कमजोर है और लड़का मजबूत है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं। हमको क्रिएट नहीं करना चाहिए ऐसा डिफरेंस, इसमें नुकसान हो जाएगा। ये जो आप अभी बेदारी की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि गर्ल्स एंड बॉयज, हम यहाँ अपने यहाँ बच्चों से बार बार कहते हैं कि देखो कभी भी कोई फर्क न महसूस करना। कल इंडक्शन प्रोग्राम था, लड़कियां भी बैठी थी, नए बच्चे आए हैं, लड़के भी बैठे थे। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एटीट्यूड छोड़ दो जो तुम्हारे गांव में और देहात में इस तरह का है, घरों के अंदर है। अरे आज वो लड़के से बात कर रही थी, बोलो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। मैंने कहा अरे तुम लोग
एक्सचेंज करो, अपने नोट्स एक्सचेंज करो लड़कियों से। ऐसा नहीं कि दूसरा वर्ल्ड क्रिएट कर दो, मानू के अंदर लड़कियों का वर्ल्ड अलग है और लड़कों का अलग है। मैं उनसे ये कहा कि एक्सचेंज करो नोट्स, किताबें अपनी एक दूसरे से एक्सचेंज करो, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करो, अच्छी नीयत से सीखने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, ये मत करो कि उसके अंदर एक पर्चा भी लिख के डाल दो किताब के बीच में, ये लो ये भी एक्सचेंज कर रहे हैं। उसमें भी पाबंदी नहीं है। अगर भाई अगर दिल से दिल को राह है, ठीक है, हम कौन से आते हैं काजी की तरह बैठ गए वहां फालतू के लिए फैसला करने के लिए। लेकिन वी कांट क्रिएट। आपको पता है जब संजानी जब वहां ईरान के प्रेसिडेंट थे तो अब इतना ज्यादा वो कर दिया गया था कि फैमिली में मियाँ इधर बेंच पर बैठे हैं और बीवी उधर बैठी है, बीच में बच्चे। भाई ये बेंचेस खाली क्यों हैं? तो उन्होंने कहा जाके कि इस्लामिक जमहूरी इस्लामिक का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग फैमिली में ही डिवीजन पैदा कर दो। फिर दूसरे दिन से बेंचेस भरने लगी। अब पार्कों में अगर आप लेडीज का अलग विंग बना देंगे और पार्कों में तो नहीं चलेगा ना। वो बात अलग है कि बस में लिखी रही है कि सिर्फ महिलाएं। भाई वो तो ये मैंडेट है, वो उसको तो आप नहीं कर सकते। या फिर आप कहें कि ये बुजुर्ग लोगों के लिए है ये सीट, तो वो तो बुजुर्गी की वजह से है। लेकिन वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसीलिए एथिक्स और मोरालिटी दो पैरेलल चलते हैं। एथिकल नोट्स दूसरे होते हैं, मोरालिटी के नोट्स दूसरे होते हैं। आप अगर बस में देख रहे हैं, एक लड़की है, जवान लड़की है, लेडीज सीट पर बैठी हुई है, लेकिन अगर कोई शेक करता हुआ बूढ़ा आदमी आएगा तो उसकी मोरालिटी ये कहती है कि उसको जगह दे। ये सब, ये एटीट्यूड, ये अवेयरनेस हमको अपने बिल्कुल बिगिनिंग से दिखानी चाहिए। अपने घर में डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, आगे जाके वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। I won't take much time. सर ने कोई बात पूछे है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि we have Laadli fellowships. Every year we give 15 fellowships to write on certain issues. And वो fellowship articles के लिए हम चाहते हैं कि वो remote villages में जाए, stories लिखे, issues पे लिखे जो regular media में नहीं लिखा जाता है. So we have 15 fellowships. Again, we give it in 7-8 languages from across the country. वो एक बहुत important intervention है हमारा. No. For all people, for young people, old people, women, men, LGBTQI, everybody. लाडली अवार्ड शुरू में मेरी कई दोस्तों को मिला है, वो वुमेन्स के लिए ही था। As I told you, 70% are women, 35% are men. It's been like that since beginning. So हम बहुत कुछ करते हैं जो to promote हमारे winners जो है अलग अलग जगह से. No, we don't have any discrimination. The best story wins, whether it is by a woman or man. If women are writing more good stories, I can't help. Yes. थैंक यू मैम। एक इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं ये भी बता दूं, अभी परसों 2 दिन पहले ही देहरादून में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, मानू और यूनिसेफ के मुश्तरका ताउन से एक बड़ा वर्कशॉप हुआ जिसमें 150 मीडिया प्रोफेशनल्स और मीडिया स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। 12 हमारे बच्चे भी थे और उसमें जो इंटरनल कंपटीशन हुआ उसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला जिस ग्रुप को, उसे भी हमारी 2 बच्चियां लीड कर रही थी। इत्तेफाक से नाजली और फायजा हैं। और उस वर्कशॉप में मतलब जिस तरह के लोग थे, पंकज पचौरी थे, फॉर्मर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संजय भीगिया ना, बड़े बड़े मीडिया, हैदराबाद से भी सोमा शेखर जी थे और बहुत सारे इस तरह के नाम थे। तो मुझे बताते हुए, और तीसरा इनाम भी जिस ग्रुप को मिला, इत्तेफाक से 3 ही इनाम थे और 2 इनाम जिस ग्रुप को मिला, पहला इनाम मानू की 2 स्टूडेंट फायजा और नाजली जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट है वो लीड कर रही थी, उनके साथ जामिया शिमला यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज के भी स्टूडेंट थे। थर्ड प्राइज भी जो इत्तेफाक से जो हमें मिला, उसको भी लीड करने वाली एक लड़की ही थी जो मानू की, और एक फैजान और ये लोग थे, और वो सिद्दीका फातिमा जो हैदराबाद की है इत्तेफाक से, उसे भी थर्ड प्राइज मिला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है वो हमारे स्टूडेंट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेहद शुक्रिया आप सबका। सर आप हमारी तारीफें मत कीजिए मानो की,
लेकिन आप हमको ये कबूल करना पड़ेगा, ये मीडिया मानू को बहुत सीरियसली लेता है, और यूनिवर्सिटीज की तरह जो है वो हमारे लिए ऐसे कैमरा लगा के रखते हैं कि कुछ मिल जाए, कोई ऐसी खबर मिल जाए कि जैसे मुझे वो सियासत वाले कहने लगे, हसन साहब ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। ढूंढो भाई ढूंढो, मगर ये है कि एक बार फोन कर दो कि ये क्या बात सही है, ऐसा झूठा सच्चा मत लिखो ना, नजर उन्हीं पे रहती है जिनसे मोहब्बत होती है। नहीं, हमारे लिए बहुत बात है, ये मीडिया सेंटर है, हमने आपके पेपर सवार आपको जितना भी जो कुछ भी हमारे पैनल को करें, हमें उसको छेड़ा छाड़ा नहीं है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से लोग हमारे पैनल बनाने, हमसे भी हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को जो देखिए, मकसद हमारा ये है कि हमारे आप प्रोग्राम्स को आप जरूर उसको सामने रखिए। हमें ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली ये वाइस चांसलर की तारीफ में बैठ जाए, नहीं, वो मत कीजिए। आप ये देखिए कि ये प्रोग्राम कितने फ्रूटफुल है पूरे इंडिया के लिए, और यहाँ से अगर एक मैसेज पूरे इंडिया में जा रहा है तो उससे बड़ी बात नहीं है। आपके न्यूज़पेपर की कितनी वो टीआरपी बढ़ेगी हमें, वो आप जानिए, लेकिन कितना ज्यादा फायदा होगा लार्जर कम्युनिटी को, ये हमारा पर्पस है जिसको हम देखते हैं। जी, शुक्रिया सर। वैसे मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि हैदराबाद की मीडिया बहुत पॉजिटिव है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब अगर कंपैरिजन करें मुल्क के दूसरे हिस्सों से, तो हैदराबाद की मीडिया बहुत पॉजिटिव है और अच्छी चीज़ों को हाईलाइट भी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही मसरूफियत वाला है, बहुत बड़े-बड़े इवेंट हो रहे हैं। बाई इलेक्शन है इसी तेलंगाना में, जिसकी वजह से बड़े-बड़े लीडर्स कैंपेन कर रहे हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जिनको छोड़ के आज हमारे दरमियान आप आए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी मैं देख रहा था, तो मुझे सुबह से ही बहुत सारे साथियों ने फ़ोन किया कि आना थोड़ा मुश्किल होगा, आप रिलीज़ भेजिएगा, क्योंकि शायद शहर भी जो ट्रैफिक है उसकी वजह से फँस जाएँगे, तो हम वहाँ नहीं जा पाएँगे। तो आप मुझे भेजिएगा। हम सबके शुक्रगुज़ार हैं आप सबके कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कल शाम को 6 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस के ही डीडी ऑडिटोरियम में ये अवार्ड फंक्शन है। आप ज़रूर आएँ, अपने फ़ोटोग्राफ़र्स को साथ लाएँ, कैमरामैन को साथ लाएँ। हम आपका इस्तकबाल करेंगे, खैर मकदम करेंगे। अभी मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम साथियों से कि गेस्ट हाउस में लंच पे हमें जॉइन करें, और आज की अगर कोई प्रेस रिलीज़ या प्रेस किट नहीं हो, तो हमारे ऑफ़िस से ले सकते हैं। बेहद शुक्रिया।